हेलो गाइस एंड वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे Vivo T3 Pro का BGMI टेस्ट। हम खेलेंगे BGMI अपने Vivo T3 Pro में। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। UFS 3.1 आपको इस फोन में मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 मिल जाता है। तो BGMI खेलेंगे, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है हमारे Vivo T3 Pro में। क्या अपने पैसे आपको इसमें डालने चाहिए, क्या 25-26 हज़ार में ये फ़ोन आपको लेना चाहिए नहीं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो। सो गाइस यहाँ पर BGMI जो है हमारा वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे आपको ग्राफिक वगैरह दिखा देते हैं। सेटिंग में जाके सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ग्राफिक में तो देख सकते हैं यहाँ पर HD और एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि 60 FPS तक आप यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हैं। और हम यहाँ पर खेल रहे हैं TDM। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है हमारे Vivo T3 Pro में। Present real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. Team match, let's go. For the first time. Cover me. Reloading. Target down. Blue team is unstoppable. Three for the blue team. Cover me. Enemy down. सो गाइस आधा गेम कंप्लीट हो चुका है। अभी तक कोई मुझे मेजर लैग्स एंड स्टटर वगैरह नोटिस नहीं हुए, कोई हीटिंग वगैरह मुझे नोटिस नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर वेपर चैम्बर कूलिंग लिक्विड मिल जाता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी जल्दी यहाँ पर फ़ोन को ठंडा कर देता है, फ़ोन को नॉर्मल टेम्परेचर में ले आता है अगर आपका फ़ोन हीट कर रहा है। वैसे मुझे यहाँ पर कोई भी मेजर लैग एंड स्टटर, कोई भी हीटिंग इशूज़ मुझे नहीं आ रही अब तक।
सो गाइस ये था एक छोटा सा BGMI टेस्ट हमारे Vivo T3 Pro में, जो कि हमारे पास 8 GB रैम वाला वेरिएंट था। हमने यहाँ पर BGMI खेला एक TDM मैच, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया, कोई भी हीटिंग इशू नहीं लगी। यहाँ पर तकरीबन हमने एक मैच खेला तो वो 6-7 मिनट का एक सेशन था, कोई भी मेजर लैग एंड स्टटर मुझे नोटिस नहीं हुए, काफ़ी अच्छा फ़ोन परफॉर्म करता हुआ। तो डेफिनेटली आप गेमिंग के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 20 से 25 हज़ार रुपये के अंडर है। ये तो एक छोटा सा वीडियो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।